लॉक हो गया ना Good morning, parents. Today we will discuss triangles and its property. That is part third, in which we have to discuss about the exercise 6.4. I am your math teacher, Lakshmi Kumar. Let me discuss about the question number 4 of exercise 6.4. That is, ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral like this. ABCD is a quadrilateral like this. And these are the two diagonals of A, B, C, and D. Okay. In this quadrilateral, we have proved that AB plus BC plus CD plus DA is greater than AC plus BD. Is it possible or not? Okay, we have to prove it. For this, if you want to solve this, then we have to consider some triangles in this figure. We can easily see that there are many triangles in this figure, and these are A, B, D, triangle 1, okay, and B, C, triangle 3rd, and next triangle is ADC, triangle 4th. Okay, in these triangles we can apply the property of triangle, that is the sum of any two arms is always greater than the third arm. Okay, now we have to consider these four triangles. In triangle 1, ABD. Now in triangle ABD, in this triangle, two sides is always greater than third side, right? Always greater than third side. In triangle ABD, this is the triangle, and this triangle has three arms, 1, 2, and 3. Okay, इस स्टेटमेंट में जो हमें प्रूव करना है कि इसमें ये सभी एक साइड रहेंगे, ये सभी एक साइड, AC and BD both are the diagonal of this figure, so these two be in same side, these two be are in same side. Okay, मतलब ये सभी जो होने चाहिए वो एक ही साइड में होने चाहिए, तो वो हमने ध्यान रखना है थोड़ा सा. तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इन ट्रायंगल में we have three sides, 1, 2, and 3, and BD should be in one side, and AB and AD should be in one side. Okay, it means the side sum of two sides AB and AD, AB plus AD should be greater than the third side, that is BD. समझ गए मेरी बात कि ये जो है ये हमने एक साइड रखना है और बाकी दोनों को एक साइड रखना है, तो सभी में डायगोनल्स को एक साइड रखना है. ओके, दिस इज योर फर्स्ट इनइक्वालिटी. Next inequality is in the next triangle, that is BCD. In triangle BCD, इस triangle में हमारे पास क्या है कि sum of two sides greater than third side. Okay, sum of two sides in this triangle BCD. Okay, we have two sides BC and CD. They should be in one side, and the another arm should be in other side. It means BC plus CD is greater than BD. That's your second inequality. Next one is in triangle next. Next triangle is ABC. In triangle ABC, the sum of two sides should be greater than third side. ABC, this triangle क्या अगर हम देखेंगे तो इस triangle ABC,
इस ट्रायंगल में हम देखेंगे सम ऑफ टू आर्म्स AB plus BC should be greater than AC. AB plus BC should be greater than AC. Okay, and the fourth triangle is, it is the third inequality, and the fourth triangle is this. Okay, this is ADC in triangle ADC. ADC में देखेंगे हम अपने पास, तो sum of two sides AD plus CD should be greater than the third side AC. Okay, that's your fourth inequality. Clear? देखो अलग अलग ट्रायंगल्स को चूज करना है, जैसे मैंने फर्स्ट ट्रायंगल चूज किया है इन ट्रायंगल ABD, दिस ट्रायंगल। नेक्स्ट ट्रायंगल मैंने चूज किया है BCD। ओके, सेकंड ट्रायंगल ये हो गया। थर्ड ट्रायंगल मैंने चूज किया है ABC, ये ट्रायंगल हो गया। और फोर्थ ट्रायंगल मैंने चूज किया है ADC, ये ट्रायंगल। क्लियर? फोर ट्रायंगल्स वी हैव टू चूज। ओके, इसमें दो डायगोनल्स आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन वी हैव टू ऐड दीस थ्री इनइक्वालिटी। ठीक है, ऐड इनइक्वालिटी 1 2 3 and 4. Clear? And 4. Next one is add these inequality. It means the LHS should be add with LHS and RHS should be add with RHS. Okay. So LHS first inequality has AB plus AD. Clear? Second inequality has in LHS, that is BC plus CD. Clear? Next one, it has AB plus BC. Next it has AB plus CD. Clear? Next one, the sum of RHS. RHS is this. Greater than का symbol है, तो greater than का symbol use करेंगे BD plus BD. Next one, AC plus AC. Clear? AC plus AC. Okay. Next one, it has 4 steps. According to we have add these steps AB and AB. It means 2 AB. Add हो जाएंगे AD plus AD. It has 2 AD. BC plus BC. It has 2 BC. Plus CD plus CD, 2CD. Clear? Next one is equals to AC plus AC is equals to 2AC. Greater than का सिंपल है देखिए, तो greater than आ जाएगा AC plus AC 2AC and BD plus BD 2BD. Clear? Now we can take the common into both sides, that is 2. Okay. It means 2AB plus BC plus CD plus AD. Okay. Next one is greater than 2 common AC plus BD. Clear? 2 can be cancelled out into the both sides, or we can divide 2 into both sides, or we can get the answer, that is AB plus BC plus CD plus D, yeah, A is greater than AC plus BD. AC plus BD. Clear? That is the simple method we can calculate easily. We can calculate easily the answer. Okay. This sentence we have to prove this in this question, and the answer is AB plus BC plus CD plus AD is should be greater than AC plus CD. तो ये हमारे पास था AB plus BC plus CD plus DA is greater than AC plus BD. तो इसका मतलब हमारे पास आंसर सेम है. It means it is possible. So it is right. Okay. Hence proof लिख सकते हो और लिख सकते हो it is right. Clear? तो ये आपका फाइनल आंसर है. That's your answer. Okay. एक थोड़ा छोटा सा कंफ्यूजन है. AB है उसमें BC भी है, CD है, बट यहाँ पर D है और वहाँ पर AD है. तो AD और DA का मीन्स एक ही है. देखो इधर AD and DA both are same, क्योंकि it can represent the same side. आप इसको AD भी लिख सकते हो और इसको DA भी लिख सकते हो. That's your solution of question number 4.
Okay, now we have to discuss about the question number 5. Question number 5 of exercise 6.4. 6.4. ABCD is quadrilateral is अब इसमें एक और सेंटेंस को प्रूव करना है इसी तरीके से ABCD क्वाड्रिलेटरल डिस्कस किया है क्वेश्चन 5 में क्वाड्रिलेटरल ABCD कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप सपोज कर लीजिए दिस इज द क्वाड्रिलेटरल and its name is A B C E clear now we have to prove that in this quadrilateral is AB plus BC plus CD plus DA should be greater less than 2AC plus BD. क्या ऐसा हो सकता है? Is it possible in this question? We have to prove it. Okay? इसके लिए मैं एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ in this triangle, in this quadrilateral. That is, we have to draw two diagonals. तभी तो इसमें triangles बनेंगे. तो इसलिए मैंने इसके दोनों diagonals को draw कर दिया. And these two diagonals intersect at O point. इस point पे intersect कर रहे हैं. Clear? And this is O point. And we have 4 triangles in this figure. Okay? अब हम O point की reference में 4 triangles को define करेंगे. Triangle number 1, triangle number 2, triangle number 3, and triangle number 4. We have 4 triangles. 1, 2, 3, 4. Okay? So first triangle is A or B. Solution बता रहा हूँ मैं. Solution in triangle A or B. A or B. In this triangle, the sum of two sides is greater than the third side. Okay, ये हमारे पास है. तो हम लिख देंगे third side. Okay, या फिर हम वहां लिख सकते हैं third side is less than the sum of two sides. मैं ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. देखो इधर कि हमारे पास मतलब ऐसा भी लिख जा सकते हैं कि sum of two sides always greater than third side. तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं third side is always less than sum of two sides. LHS को इधर और RHS को इधर. अगर LHS को इधर करोगे तो सिंबल भी उल्टा हो जाएगा. उसमें greater than का सिंबल था तो इसमें less than का सिंबल होगा. Okay? In this figure we have to consider third side. Third side is AB. क्योंकि बाकी सभी एक साइड रहेंगे तभी तो हमारे पास डायगोनल्स बनेंगे. ये दोनों डायगोनल्स के पार्ट हैं तो एक साइड पे रखना है उनको और इस थर्ड फिगर को इस साइड. तो थर्ड साइड इज AB. ओके, लेस देन द सम ऑफ टू साइड्स AO plus BO. Clear? That's your first inequality. Next one in triangle. Second triangle we have to consider is this A in triangle A or B. A or B. इस ट्रायंगल में अगर हम कंसीडर करेंगे तो थर्ड साइड शुड बी लेस देन सम ऑफ टू साइड्स. तो थर्ड साइड हमारे पास क्या है AD प्लस BO. Clear? That's your second inequality. Next one is in triangle third. Triangle D or C. In triangle D or C. तो इसमें देखेंगे थर्ड साइड इज CD is less than OD या DO plus C. Okay, or C लिख सकते हो. That's your third inequality. Next one is in triangle 4. Triangle 4 is B or C. In triangle B or C. इसमें देखो third side is less than the sum of two sides. The third side is BC is less than the sum of other two sides. कौन से होंगे? ये और ये. तो ये क्या हो जाएगा? BO and CO. 4. Clear? तो हमारे पास 4 इनइक्वालिटी को क्या कर देंगे? सम कर देंगे. ओके, देन add 4 हो गया. It means AB plus AD plus CD plus BC. Okay, 1, 2,
3 4 एलएचएस को सभी को ऐड कर दिया, आरएचएस को भी ऐड कर देते हैं। लेस देन का सिंबल है सभी में, लेस देन, तो हम इन सभी को ऐड कर देंगे। एओ प्लस बीओ, ओके, प्लस एओ प्लस ओडी, एओ प्लस बीओ, प्लस डीओ प्लस सीओ, प्लस in this BO plus CO. Clear? Next one is we have to add these parts. इसमें तो सेम कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही है। BC अलग है इसमें, ओके, इसमें AD, ठीक है, AD हो गया, CD हो गया, BC हो गया। इसको सीक्वेंस में लिख देता हूँ। एडिशन में हम आगे नीचे स्टेप ले सकते हैं। BC हो गया, फिर CD और फिर AD या D की बात। क्लियर? लेस देन, अब देखो AO एंड देखो AO ये रहा, ठीक है, AO और AO इसमें एक और है, ये तो 2AO। क्लियर? BO भी 2 है, 1 and 2, तो 2BO प्लस CO भी 2 है, तो 2CO। इसी तरीके से DO भी 2 है, तो 2DO। क्लियर? तो DO भी 2 हो गए। इसी के बेसिस पर देखो DO ये रहा और एक ये रहा, तो DO 2D होता है। इट मींस लेस देन 2 इज कॉमन, ओके। AO के साथ में लिखूंगा CO, ठीक है, एडिशन में आगे पीछे कर सकते हैं, और BO के साथ में लिखूंगा DO। क्लियर? इट मींस AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज लेस देन दिस। क्लियर? AO प्लस CO is equals to AC। इन दोनों का सम क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज AC। इट मींस AB plus BC plus CD plus AD should be less than 2। AO plus CO is equals to AC and BO plus OD, BO plus DO is equals to BD। So that's the statement that we have to require. We have to prove this statement. So according to your answer, we can easily see that this statement is true. This statement is true. It means we can write here hence proof, या फिर हम लिख सकते हैं this statement is right. It is right. Okay. That means ये हमारे पास proof हो गया. That's your exercise 6.4 fifth question. Now we have to do next question, that is question number 6. Question number 6. The length of two sides of a triangle are 12 cm and 15 cm. Between what two measures should be the length of the third side for? Okay, a triangle है, we have a triangle, and in this triangle we have two sides. These are 15 cm and 12 cm. 15 cm and 12 cm. And we have to guess the third side. Third side we have to guess. In between it will be lies, okay, मतलब किन दोनों किस रेंज में होगा, इसकी रेंज हमें बतानी है कि इसमें किन के बीच में ये होगा। द मिनिमम लिमिट एंड द मैक्सिमम लिमिट, रेंज के बारे में हमने पहले पढ़ा है। द मिनिमम, द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लिमिट एंड द मैक्सिमम लिमिट, रेंज वी हैव टू डिसाइड। तो थर्ड साइड की रेंज अगर हमें डिसाइड करनी है तो हमने एक प्रोबेबिलिटी तो पढ़ी है, द थर्ड साइड should be less than the sum of two sides, okay, मतलब दो साइड्स का जो सम होता है वो हमेशा थर्ड साइड से क्या होता है, बड़ा। इट मींस इसकी जो रेंज होगी वो इनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बीच में होगी, है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बीच में। तो इट मींस इससे तो बड़ा होगा, इससे तो छोटा होगा, और इनके डिफरेंस से बड़ा होगा, इनके माइनस से बड़ा एंड इनकी एडिशन से छोटा। समझ रहे हो मेरी बात? देखो दोबारा बताता हूँ। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के दो साइड्स हमें बताए, एक तो है 15 और एक है 12, ठीक है। तो वो
ये कहते हैं कि जो थर्ड साइड होती है वो इन दोनों के सम से हमेशा छोटी होगी, तो 15 प्लस 12 से हमेशा छोटी होगी थर्ड साइड। क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया मैक्सिमम लिमिट क्या है 15 प्लस 12, इससे बड़ी नहीं हो सकती। और इन दोनों के डिफरेंस से हमेशा क्या होगी बड़ी, इन दोनों के डिफरेंस से हमेशा क्या होगी बड़ी थर्ड साइड। तो इसका मतलब इससे छोटी नहीं हो सकती। तो मिनिमम लिमिट इज द डिफरेंस एंड द मैक्सिमम लिमिट इज द एडिशन ऑफ द बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये इसकी रेंज होगी। ठीक है, इन बिटवीन दीज टू, इन बिटवीन these two it will be lines. Okay, so 15 minus 12 is equals to 3 centimeter and 15 plus 12 is equals to 27 centimeter. That's your answer. Clear? मतलब इससे तो बड़ी होगी और इससे छोटी होगी, इनके बीच में कहीं पर भी हो सकती है। That's your answer. Okay, कहीं पर भी अगर दो ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल की दो साइड्स गिवन हो तो थर्ड साइड शुड बी द ग्रेटर देन with the difference of these two sides and the less than with the addition of these two sides. Clear? That's your 6.4 exercise. Now we have to discuss about the exercise 6.5. Exercise 6.5. 6.5 exercise is completely based on the theory that we have to later discuss. And this topic is about the right angle triangle. Okay, तो 6.5 जो होती है वो कंप्लीट एक्सरसाइज है, वो आपके राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस है और उसकी पाइथागोरस थ्योरम पे बेस है। और पाइथागोरस थ्योरम हमने पहले ही लिखी है, याद होगा सभी को कि इफ वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल देन it is the longest arm of this triangle because it is 90. One angle is 90 degree. One angle is 90 degree. In a right angle triangle, one angle is 90 degree, and the longest arm is the just opposite to the right angle. That is called hypotenuse. That is called hypotenuse. And these two are called perpendicular and base. Okay, longest arm जो होती है वो होती है hypotenuse. तो इसमें एक थ्योरम हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, that is the square of base and perpendicular always equals to the square of hypotenuse. Square of hypotenuse. In right angle triangle, it is the Pythagoras theorem. Okay. Now we have to discuss first question. We have to discuss about the first question. Question number 1. Question number 1 is PQR is a triangle, right angle triangle at P. Okay, PQR is a triangle, right angle triangle, and right angle at P. Right angle जो है वो किस कौन से पॉइंट पे P, P, Q and R. Okay, ये क्वेश्चन में गिवन है. And PQ is equals to 10 centimeter. PQ is equals to 10 centimeter. PR is equals to 24 centimeter, and we have to discuss about the length of QR. Length of QR. Oh, sorry, PR is equals to 24 centimeter. PR is equals to 24 centimeter, and we have to discuss about the length of QR. Okay. तो हमने इस क्वेश्चन में देखा कि we have two measures of a perpendicular and base. We have to calculate hypotenuse. So according to Pythagoras theorem, okay, that is क्या था? Hypotenuse, the sum of these two, it means perpendicular and base, should be equals to the square of the hypotenuse. Square of the hypotenuse. Let the measure of QR is equals to x. हमने ये मान लिया कि इसका मेजर क्या है x. Okay, तो PQ square is equals to 10 square. PR square is equals to 24 square. And QR is equals to x square. Okay, it means 10 square is equals to 100 and 24 square is equals to 596. 596 is equals to x square. Is equals to x square. Okay, it means we have to add these two. Okay, sorry. कितना होता है देख लीजिए आप. 24 square is equals to कितना होता है
Okay, 576. 576. And we have to add these two. X square is equals to 676. Okay, it means x is equals to, हम क्या करेंगे, x square is equals to 676 है. It means we have to calculate x value. We can easily calculate this by the square root of both sides. Square root of both sides. It means 676 square root of this. Okay, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? इसका स्क्वायर रूट होता है x और 676 का स्क्वायर रूट हम कैलकुलेट कर लेंगे. That is 26. 26 centimeter is the length of this third arm. Okay, that's your answer. Now the question number 2. Question number 2 is ABC is a triangle right angle at C. ABC is a triangle right angle at C. ABC. Okay, right angle is space C pe. C here, A, B, and C. Clear? A, B, and C. It is a right angle triangle, and the right angle at given at C point. Okay, it means AB 25 centimeter, AC is equals to 7 centimeter, and we have to calculate BC. BC हमने calculate करना है, तो BC is very simple. That is the base of this triangle. And we can put this as x. इसको हम मान लेते हैं कितना है x. तो अपने को इजीली पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या बोलेंगे. According to Pythagoras theorem, the square of hypotenuse, so the square of base in perpendicular addition is equals to the square of hypotenuse. Means BC square plus BC square is equals to AB square. Clear? Now BC is equals to x square. AC is equals to 7 square, and AB is equals to 25 square. Clear? Now the square of this 49, the square of this 625. Clear? Now the value of x square. X square को करना है तो इसको अकेला लेने देते हैं, तो इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है. Same number we have to subtract into both sides. It means x square plus 49 minus 49 is equals to 625 minus 49. इससे क्या होगा, x square इक्वल होगा 49 minus 49 is equals to 0 is equals to 625 minus 49 is equals to कितना होगा, 15 minus 9 6, 11 minus 4 is equals to 7. Clear? So 576, and we have to take square root of both sides. X square का square root होता है x और इसका square root होता है 576 square. Okay. Now the next question is number third. Question number third is very simple. A 50-meter long ladder reached a window 12 meters high from the ground. One place against a wall at a distance A. Find the distance of the foot of the ladder from the wall. Okay, इस तरीके से एक फिगर गिवन है, and the ladder is placed about the window. Okay, ये window के अकॉर्डिंग रखा हुआ है, and its foot is placed at the ground at some distance that is A. We have to calculate this value of A. Okay, and this length is equals to 15 meter, and this height is 12 meter. So we can easily see that it is a right angle triangle, and right angle is here. Okay, if we consider this point is equals to A, then this point is B, then this point is C. Okay, and we can easily apply Pythagoras theorem. Okay, Pythagoras theorem के according क्या होगा? The square of hypotenuse AC square, the square of the sum of these two sides, these are base and perpendicular, AB plus BC, should be equals to the square of hypotenuse, the longest arm square. Clear? AB is equals to A. AB is equals to A, and next one is AB is equals to A, and BC is equals to 12, and AC is equals to 15.
Okay, a square plus 12 square is equals to 144. 15 square is equals to 225. Okay, and next one is a square. A square को अगर अकेला करना है क्योंकि इसको कैलकुलेट करना है तो we have to subtract same into both sides. That means 144 minus 144 is equals to 225 minus 144. A square, this minus this is equals to 0, and 225 minus 44 is equals to 44 is equals to 44 is equals to कितना होगा? 5 minus 4 is equals to 1. 12 minus 4 is equals to 8. Okay, 81. Now a is equals to square root of both sides. A square is square root of a square is equals to a, and 81 square root is equals to 9. 9 is the answer of this side. Clear? This is your solution of third question. Now the solution of question number 4. The solution of question number 4. Question number 4. This is your question number 3rd. Now the solution of question number 4. That is very simple. Which of the following can be the sides of a triangle, right angle triangle? Okay, इन तीनों में से कौन कौन सी जो है वो right angle triangle की sides हो सकती है? तो 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर and 6 centimeter. We have to check that these side can be a side of a right angle triangle or not. मतलब ये side जो है वो एक right angle triangle की हो सकती है या नहीं. We have to check this. So we can easily check this by the square of one side should be the sum of the square of two sides. Pythagoras theorem के according. बट हमें क्या पता है कि इसमें से किसका एक का स्क्वायर जो है वो बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा. तो इसके लिए आपने देखना है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो एक साइड रहता है. तो हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट आर्म ऑफ एनी ट्रायंगल. लॉन्गेस्ट आर्म ऑफ एनी ट्रायंगल. तो अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता तो कुछ इस तरीके से बनता और लॉन्गेस्ट आर्म बनती 6.5 सेंटीमीटर. क्लियर? एंड दीस टू साइड्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर. Now we have to check the square of this side should be equal to the sum of square of these two sides. Okay, here 6.5 square is equals to 6.5 square is equals to 42.25 centimeters square. Clear? Next one is this. Now the square of the sum of these two sides. Okay, the sum of the square of these two sides is equals to 2.5 square plus 6 square. 2.5 square is equals to 6.25. Okay, 6 square is equals to 36, and 36 plus 6 is equals to 42.25. Here 6.5 square is equals to 2.5 square plus 6 square. देखो है क्योंकि इसका स्क्वायर ये आ रहा है और इन दोनों के स्क्वायर का एडिशन ये आ रहा है तो दोनों सेम है. इट मींस द स्क्वायर ऑफ दिस साइड शुड बी इक्वल्स टू द सम ऑफ दीस टू साइड स्क्वायर्स. सो वी कैन इजीली से दैट इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. अगर ये कंडीशन सैटिस्फाई हो जाती है तो पाइथागोरस थ्योरम सैटिस्फाई होगी. सो इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. सो इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, बाकी दो का आप अपने आप चेक कीजिएगा. दैट्स योर होमवर्क कि अगर वो ये दोनों चीजें इक्वल नहीं आती हैं. ठीक है, पहले तो आपको क्या करना है, तीनों मेजरमेंट से पता लगाना है लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है. तो लॉन्गेस्ट जो भी मेजरमेंट होगा उसको हाइपोटेनस कोस करना, बाकी सबको बेस और परपेंडिकुलर. ओके, और उसके अकॉर्डिंग हम दोनों के देख लेंगे. अगर दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा. अगर नहीं है तो इट कैन बी अ राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, यू कैन इजीली सॉल्व इट एट होम. ओके, दैट्स योर होमवर्क. Next one is question number 5. A tree is broken at a height of 5 meters from the ground. It is a very tricky question because it is a daily life based question. मतलब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो हम डेली लाइफ से इसको रिलेट कर सकते हैं.
जैसे आसपास घर के आसपास कभी पेड़ टूटा होगा या कभी देखा होगा आपने, तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। A tree is broken at a height, ओके, हमारे पास एक ट्री है, ट्री गिवन है, ओके, और इसने ये बोला है ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये इसका बेस हो गया, इस बेस से 5 मीटर हाइट के ऊपर ये क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। टूटने के बाद ये क्या होगा, नीचे की तरफ गिरेगा, या तो इस साइड या उस साइड, वो हम देख लेते हैं, ओके। और इसने पूछा है कि इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। जैसे ही गिरेगा तो ये टॉप जो है वो किसको टच करेगा, ग्राउंड को, यूं गिरेगा, है ना। तो जैसे ही गिरेगा तो ये टॉप जो है वो यहाँ नहीं टच करेगा, तो जैसे ही टच करेगा तो वहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे ही वो टच करेगा तो वहां पर हमारे पास यूं आ जाएगा ना, क्योंकि टच जैसे गिरेगा तो यूं, लेकिन जैसे ही गिरेगा तो ये यहाँ से कुछ कुछ ना कुछ अटैच रहता है, ये जब टूटता है पेड़ तो, और बाकी जो इसका जो टॉप होगा वो कहाँ होगा, ग्राउंड को टच करेगा। तो जैसे ही टच करेगा इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। तो कितनी मीटर इसने बोला है, 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। जो भी ट्री का बेस है वो इसका टॉप कहाँ पर टच होता है, 12 मीटर डिस्टेंस पे, ओके। नाउ फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, ओके। हमने इसकी ओरिजिनल हाइट को कैलकुलेट करना है, तो इसने 5 मीटर हाइट से ड्रॉप होता है, ये हाइट ये हम मान लेते हैं कितना, x है, तो इट मींस जो ये जो है यही टूट के यहाँ आया, तो ये भी क्या होगा, x होगा। तो अब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम, ओके। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीस टू साइड्स। इट मींस 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द हाइपोटेनस स्क्वायर, ओके। इट मींस x स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसको इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो लिख देते हैं। 12 square is equals to 144 and 5 square is equals to 25 and these two sum is equals to 169 is equals to x square and x is equals to, पता ही है x का स्क्वायर रूट होता है x स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है x and 169 का स्क्वायर रूट is equals to 13, okay। it means x is equals to 13 मीटर। ये इसकी ओरिजिनल हाइट नहीं है, ये सिर्फ इतना पार्ट जो ये जमीन पे टच हुआ है, इतनी पार्ट का वैल्यू है 30 मीटर। देन द हाइट ऑफ ट्री, सो द हाइट ऑफ ट्री कितना होगा टोटल, is equals to the sum of this broken height and the remaining height, that is equals to x, that is 13 meter is equals to 18 meter is your answer. The total height of the tree is equals to 18 meter. Clear? Next one is angles PQ. Question number 6 is angles Q and R of a triangle PQR are 25 degree and 65 degree, right? Which of the following is true? ठीक है, हमने इस स्टेटमेंट के बेसिस पे बताना है कि जो नीचे दिए हुए स्टेटमेंट है उनमें से कौन सा ट्रू है। तो पहले देख लेते हैं कि गिवन क्या है। बोल रहा है we have a triangle 6, question number 6, we have a triangle and the measure of two angles are 25 degree and 65 degree. Clear? PQR are the vertices of this triangle. PQR are the vertices of this triangle. Now we have to think that this statement is true. So three statements are given here. कौन से हैं? First statement is this. Second statement is this. RT square is equals to plus PQ square. Second statement plus RT square is equals to QR. Next statement, third statement is RP square plus QR square and is equals to PQ square. Okay, these three statements are given. Okay, now we have to choose that which statement is true. Okay, पहले इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। इस ट्रायंगल में हमारे पास दो मेजरमेंट्स हैं, Q and R,
angle P we have to calculate. Now we know that the sum of three triangles are three angles of a triangle. Sum of interior angles of a triangle is equals to कितना होता है 180 डिग्री. आपको पता है इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री. ओके, तो एंगल P प्लस एंगल Q 25 प्लस एंगल R 65 is equal to 180. Clear? Angle P plus sum of these two is equal to 90 and 180. Now we have to eliminate this. क्योंकि P तो कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम सेम जो अमाउंट है वो दोनों तरफ सब्सट्रैक्ट कर देंगे. P plus 90 minus 90 is equal to 180 minus 90. 180 minus 90 is equal to 90. Clear? And 90 minus 90 is equal to 0. Angle P is equal to 90. It means ये P जो है वो 90 डिग्री. So triangle PQR is a right angle triangle. Right angle triangle. Yeah. And right angle at angle P. Okay, यहाँ पर right angle कहाँ पर बन रहा है P. Okay, so hypotenuse is equals to QR. Okay, angle P is right angle. So opposite arm is this QR. So QR is hypotenuse. Hypotenuse, है ना? Hypotenuse हो जाएगा ये. और हमें पता है रिमेनिंग टू आर्म्स का जो सम का स्क्वायर होता है, स्क्वायर का सम होता है, तो दैट इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. इट मींस PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर QR स्क्वायर. तो ये किससे मैच करता है? देखो सेकंड स्टेटमेंट से मैच करता है ना. सो सेकंड स्टेटमेंट इज clear. That's your answer. Next one, question number 7. Find the perimeter of a rectangle whose length is 40 cm and diagonal is 41 cm. ये क्वेश्चन भी काफी ट्रिकी है. तो इसमें एक रेक्टेंगल गिवन है और इस रेक्टेंगल में एक हाइपोटेन्यूज डायगोनल गिवन है और एक लेंथ गिवन है. बिट हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल. ओके, वी हैव अ पैरामीटर and we have a rectangle, and in this rectangle length of this rectangle is equal to 40 cm and one diagonal is 41 cm. 41 cm. We have to calculate parameter of this rectangle. तो पैरामीटर के लिए आपको बताइए ये क्या होता है? फॉर्मूला 2 into length plus ये होता है ना. तो इसके लिए विड्थ हमें नहीं पता, तो विड्थ हम क्या सपोज कर लेते हैं b is equal to this. ये b हमने सपोज कर लिया. ओके, तो we can name these vertices as a b c d. Okay, and now we can apply the Pythagoras theorem. बट वो तो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है बिल्कुल, क्योंकि एक रेक्टेंगल में सभी एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री है ना. तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? द सम ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है ना. पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू द सम ऑफ बेस एंड हाइट स्क्वायर should be equal to the hypotenuse square. तो hypotenuse कैसे पता लगा? राइट एंगल के बिल्कुल अपोजिट है ना. AB is equal to 40 cm, AD is equal to B, and BD is equal to 41. Clear? The sum of square of this 1600 B square 41 का कितना बनेगा? ये बनेगा 1681. क्लियर? यही होगा. तो देख सकते हो आप
इसके बाद देखो नेक्स्ट वन वी हैव टू कैलकुलेट b स्क्वायर, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। सेम वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इनटू बोथ साइड्स 1600 प्लस b स्क्वायर माइनस 1600 and 1681 minus 1600, okay, and this is equals to 0 and only we have b square and this is equals to 81. Now the b is equals to square root of both sides, so b square का square root of b and 81 का square root हम calculate करेंगे, that is equals to 9 centimeter. That's your answer. 9 centimeter is your answer. So width is equals to 90 degrees. So perimeter of rectangle is equals to 2 into length plus 2 into length is equals to 40 centimeter or width is equals to 9 centimeter. So 2 into 49 is equals to कितना बनेगा? ये बनेगा 98 centimeter. 98 centimeter. Any doubt? Next one is here question number 8. Question number 8. Diagonals of a rhombus measures. देखो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन भी इजी होगा, बस थोड़ा सा ट्रिक यूज करना है। रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज यूज करनी है, जैसे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज यूज की। The diagonals of a rhombus, rhombus हम बना रहे थे, rhombus की all sides क्या होती है? इक्वल होती है ना? The diagonals of the rhombus, yeah, all sides are equal with each other. Diagonals are 16 centimeter and 16 centimeter and 30 centimeter. 30 centimeter. This is equals to 30 and this is equals to 16. So हम easily calculate कर सकते हैं A, B, C, D, and the intersection of point we can consider O. Okay. Now we can see that the rhombus diagonals intersect with each other as the bisectors of each other. मतलब ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ही इंटरसेक्ट करेंगे कि ये जो है ये साइड इसकी इक्वल होगी और ये साइड इसकी इक्वल होगी। और सेकंड वन ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर ये टोटल हमारे पास BD जो है वो कितना है? 16 सेंटीमीटर है और AC जो है वो हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बची हुई जो साइड है ये वाली, मतलब ये जो इसकी हाफ होगी वो, मतलब ये जो बचा हुआ है इसका पार्ट, ये इसका हाफ होगा, क्योंकि ये दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करना है ना। बाइसेक्ट का मतलब क्या है? इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है। तो 30 का हाफ कितना होता है? 15 सेंटीमीटर है ना, और 16 का हाफ कितना होता है? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रोम्बस। ओके, और ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर ही रहे हैं, तो इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, वी कैन इजीली कैलकुलेट दिस। इट इज द साइड ऑफ दिस रोम्बस, तो साइड आप इक्वल भी दीजिएगा रोम्बस का ना, सो इट मींस वी कैन इजीली कैलकुलेट ए साइड, है ना। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 15 and 8 should be equal to the side square, उसकी थर्ड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर की इक्वल। It means 15 square is equal to 225, 8 square is equal to 64, and the addition of these two 9, 8, 2. Okay, ये हमारे पास हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स a, ये स्क्वायर था a हो जाएगा, एंड 289 का कितना होगा वो हमने सोचना है। ठीक है, तो आपको पता ही है ये होता है 17, a is equal to 17 centimeter. A is equal to 17 centimeters. You have clear? Now the perimeter of rhombus, perimetry calculate करना है ना? Perimeter of rhombus is equal to the 4 into side. ये है, क्योंकि सभी साइड सेम है तो सभी साइड्स का सम जो होगा 4 into side हो जाएगा। तो 4 into A is equal to 17. 68 centimeter is your answer. Clear? That's your exercise 6.5. Okay. If you have any kind of देख लेते हैं पर डाल भाई आ जाएगी। Okay. That's your 6.5 exercise and 6.4 we later discuss. Okay. If you have any kind of doubt, then you can ask me later. Okay.
at your WhatsApp group. Thank you.